आज से अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 साल पहले मैंने अपना गोल और विजन बनाया था कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। एंड कंसिडरिंग मैं अपने अर्ली 20s में था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये एक्चुअली पूरा भी हो पाएगा कि नहीं। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ओनली थिंग दैट आई हैड वाज दिस वन डॉक्यूमेंट जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। स्पेशली अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप सीख सकते हैं कैसे आप इस डॉक्यूमेंट को यूज करके कोई भी गोल हो आपका, डजेंट मैटर व्हाट, चाहे आप फिटनेस में गोल्स अचीव करने की कोशिश करें, चाहे आप अपनी रिलेशनशिप बेटर करने की कोशिश करें, चाहे आप बिजनेस में सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऑन द साइड बहुत ज़्यादा पैसिव इनकम अर्न करने का सोच रहे हैं। क्या है ये एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट एंड क्या एग्जैक्ट सिनेरियो था, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। तो 5 साल पहले मैं अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था। इट वॉज जस्ट न्यू फ्रेशर एक्सप्लोरिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। एंड एट अ वेरी अर्ली पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी भी चला रहा था, जो कि एक्चुअली अच्छा कर रही थी, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं था उसको कैसे ग्रो करना है, क्या करना है। एंड जस्ट लाइक एवरी अदर फ्रेशर मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था। एंड वो टाइम्स जो थे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थे, बहुत ओवरवेलमिंग थे, स्पेशली जब पेरेंट्स वगैरह से प्रेशर आ रहा हो कि या कुछ कर ले, कर ले अपनी ज़िंदगी में। एंड अब कॉलेज भी पूरा हो गया है, नहीं करेगा तो फिर शादी कैसे होगी, शादी नहीं होएगा तो फिर बच्चे कैसे होंगे, बच्चे के नहीं होंगे तो फिर रिटायर कैसे होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट वाज द प्रेशर दैट आई वाज फेसिंग। तो उस टाइम पे व्हाट आई डिसाइड टू डू इज आई डिसाइड टू सी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस ऑनलाइन। एंड जो कॉमन चीज़ मुझे समझ आई उन वीडियोस से वो ये थी कि आपके जितने भी गोल्स हैं, यू शुड एक्चुअली try to pen them down somewhere and try to visualize them consistently. And as a result of that, एक दिन there's a pretty good chance जहाँ वो सपने आपके पूरे भी हो सकते हैं। तो one day I was actually reading this book or some snippet in the newspaper, जहाँ पे बहुत फेमस एक्टर है जिनका नाम है जिम कैरी। एंड उन्होंने क्या किया, उनका एक गोल था। जिम कैरी ने अपना एक पे चेक लिखा था अपने आप को जब वो एक एक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे। एंड उस पे उन्होंने लिखा था दैट आई वांट टू मेक $10 million। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे 10 या $20 million उन्होंने ये लिखा था। एंड उन्होंने क्या किया, इस चेक को बेसिकली फोल्ड करके अपने वॉलेट में कहीं पे स्टोर कर लिया। एंड ओवर टाइम उन्होंने जैसे जैसे प्रोग्रेस किया अपने लाइफ में, चाहे उन्होंने वेरियस काइंड ऑफ एक्टिंग गिग्स के लिए अप्लाई किया एटसेट्रा, वो काफ़ी बार रिजेक्ट भी हुए। एंड दैट फीलिंग वॉज डेफिनेटली नॉट वर्थ इट एट ऑल। बट जब भी वो रिजेक्ट होते थे, जब भी वो डिसअपॉइंट फील करते थे, जब भी वो लो फील करते थे, he would just basically take out this check and he would look at it and he would remind himself that this is what can happen if he stays focused. एंड आज की डेट में ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑन अर्थ। तो ऐसी स्टोरीज देख के जो नेक्स्ट चीज़ मैंने दैट आई केम अक्रॉस वाज अ बुक कॉल्ड एज सीक्रेट्स। पहले तो मेरे को लगता था अरे यार ये सब तो अनाप शनाप है, ये सब क्या है, आप कुछ देख वेख के थोड़ी ना विजुलाइज करके आपके पास कुछ भी लाइफ में अचीव हो जाता था। एंड मेरे को बहुत सारा क्या कहते हैं एप्रीहेंशंस थे, बहुत ज़्यादा मेरे को लगता था कि ये सब तांत्रिक वांत्रिक चीज़ें कुछ एक्चुअली अचीव नहीं होगा। बट देन व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग इज, वहाँ पे बस सीक्रेट्स में आई थिंक एक बुक लिखी थी, जस्ट ट्राई इट फॉर द नेक्स्ट 30 to 60 days। एंड अगर नहीं काम किया तो कोई नहीं, बट अगर काम किया एटलीस्ट यू वुड बी एबल टू नो। एंड मेरी पर्सनली एक फिलोसफी भी यही है, बिफोर कमिंग इन टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ जजमेंट, आपको उस चीज़ को ट्राई करना चाहिए एंड देन अपना जजमेंट फॉर्म करना चाहिए। आई डिड। लेकिन क्या मैं 30 days में अमीर बन गया या मेरे क्या सपने पूरे हो गए? एब्सोल्युटली नॉट। बट बाय मेकिंग दीज चेंजेस जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर और बताने वाला हूँ, ऑनेस्टली मेरी जो लाइफ है वो टुवर्ड्स द बेटर होने लग गई। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक गोल था, एक टारगेट था, एंड मुझे पता था कि मेरे को ये अचीव करना है। एंड सबकॉन्शियसली जब भी मेरे पास कोई एक डिफरेंट चॉइस आती थी, ठीक है, आई वुड से नो टू द डिस्ट्रैक्शंस। मैं जो डिस्ट्रैक्शंस होते थे उन्हें मना करता था ताकि मैं अपने गोल के टूवर्ड्स चल पाऊँ। एंड धीरे धीरे करके 1% 1% 1% 1% करके वो ग्रोथ होने लग गई। एंड चाहे आप उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलिए, एफर्मेशन बोलिए, या जो बोलना है बोलिए, somehow things start aligning. So let's look at what exactly I did. अब सीक्रेट्स वगैरह की बुक में तो लिखा था आप बस एक पेन पेपर पे गोल्स लिख दीजिए अपने और वो somehow पूरे हो जाएंगे। बट आई वांट टू डू समथिंग मोर एलैबोरेटिव, समथिंग मोर लाइक आई वांट टू क्रिएट एन एनहांस वर्जन ऑफ द सेम। ठीक है, तो मैंने क्या किया,
of course with respect, I got this idea from one of my mentors, Sam Owens. मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जिसका नाम हो गया विजन मैप, या फिर कह सकते हैं एल्केमी ऑफ सेल्फ, ठीक है। एंड जो विजन मैप का फर्स्ट पेज था, व्हाट आई डिसाइड टू डू इज, मैंने सारी वो पिक्चर्स इंक्लूड कर दी जो जिन इंडिविजुअल्स को मैं बहुत ज़्यादा लुक अपॉन करता हूँ, जिन इंडिविजुअल्स को मैं से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ, एंड दिस बिकेम द फ्रंट कवर ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दैट आई क्रिएटेड। जो इस डॉक्यूमेंट का सेकंड पेज था, उसका नेम मैंने लिख दिया डेली परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। और मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल सी गूगल स्प्रेडशीट बनाई, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड, एंड जो मेरे गोल्स थे उस हिसाब से मैंने काइंड ऑफ लाइक कॉलम्स बनाए डिफरेंट डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा डे, राइट, फर्स्ट कॉलम। सेकंड मैंने लिखा डेट। फिर थर्ड हो गया वेकअप टाइम, व्हाट एग्जैक्ट टाइम डू आई वांट टू वेक अप। एक्सरसाइज की मैंने उस दिन, यस या नो, क्या मैंने मेडिटेट किया उस दिन, यस या नो, बिकॉज मेडिटेशन वाज वन ऑफ माय गोल्स। स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, परफॉर्मेंस परसेंटेज कि मैं अपने आप को ऑन अ स्केल ऑफ 1% टू 100% कितना रेट करूंगा। एंड नाइट को क्या मैंने अपना माइंडसेट प्रैक्टिस किया, यस या नो। एंड बेड टाइम के मेरा क्या था, दैट वाज आल्सो द केस। सो अ बिग मिस्टेक दैट लॉट पीपल डू इज, वो अपने एफर्मेशंस वगैरह लिख लेते हैं, अपने गोल्स वगैरह लिख लेते हैं, बट उनके पास कोई तरीका नहीं होता टू ट्रैक ऑल दिस। सो बिफोर आई इवन रोट डाउन एनी गोल, राइट, बिफोर आई इवन क्रिएटेड एनी विजुअलाइजेशन की लिस्ट या एफर्मेशन की लिस्ट या व्हाटएवर, मैंने सबसे पहले ये नोट किया कि मैं इसको ट्रैक कैसे करूंगा ताकि मैं ये करना रुक ना जाए, राइट। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, दिस अलाउड मी टू रियली बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स माई सेल्फ। द नेक्स्ट थिंग दैट आई डिड इज मैंने अपने मिशंस लिखे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए, एंड जो मेरे मिशंस थे वो मैंने 5 कैटेगरीज के अंदर डाल दिए। माई कंपनी गोल, विच इज माई बिजनेस गोल। अगर आपके पास एक कंपनी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको करियर गोल लिख सकते हैं। पर्सनल गोल, फाइनेंशियल गोल, रिलेशनशिप गोल, हेल्थ एंड फिटनेस गोल, right? And for example, in terms of company goal, right, it was simple to make humans more skilled and capable of demanding their true value in the marketplace. This till date is the mission of the company that we are running. And मेरे ख्याल से आपका ये जो कंपनी गोल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो इतना easily achievable भी ना हो, राइट। क्योंकि अगर आपने अपने मिशन जो है सारा का सारा 1-2 साल में अचीव कर लिया, तो आप मोटिवेटेड क्यों रहोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल गूगल का बहुत बड़ा मिशन है विच इज टू मेक द इंटायर नेट वेरी इजीली सर्चेबल। अब ये करने में कितना टाइम लगेगा आप ये सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक सर्च इंजन से स्टार्ट किया था, उसके बाद उनको दुनिया में जितने भी मैप्स हैं उनको स्कैन करना पड़ा ऑनलाइन, फिर जाके गूगल मैप्स बनाना पड़ा। सो देयर इज सो मच स्टफ आउट देयर। कितनी सारी बुक्स हैं जो वेरियस काइंड ऑफ लाइब्रेरीज में है दुनिया में, जो अभी भी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। तो इसका ये मतलब है गूगल का मिशन जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ। बट क्या कंपनी बंद हो गई? Absolutely not. But now they have a north star towards which they can consistently work towards. ठीक है? So that's how I decided to actually form my own company goal as well. Personal goal, to ensure that I leave this earth better than it was before I arrived. Very simple goal, right? Financial goal, right? Of course, one of my goals personally is to, of course, become a billionaire, right? अब वो होता है कि नहीं, let's find out on this channel. But again, I set that out as a goal for myself so that, at least I could die trying, till the time I reach that level, राइट। अगर कोई मैं बहुत बहुत सारे लोग ना बहुत सिंपल सा गोल रखते हैं अपनी लाइफ में, कि मेरे को बस इतने से कमा के रिटायर हो जाना है। बट ऑनेस्टली दैट इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल आरंट एम्बिशियस इनफ, राइट। एंड मेरे को लगता है कि उसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट करते हो। Then I have relationship goals, right? Which is continue to establish meaningful bonds and spread love. Also be 100% committed to my parents and my few chosen friends as well, and be there for them, right? And health and fitness goals as well, to make sure that I have a body that can serve me in the long term, right? So these were some of the goals. And back in 2020, जो मैंने अपने exact 1 year goal बनाया, right? This was my mission, right? This is the thing. These are the things that I want to accomplish in the long term. But in 2020, what was the goal for that particular 1 year? Let's suppose that year I want to do 3 crores in sales and get approximately 1,000 clients. ठीक है? That was my goal back then. उसको achieve करने के लिए what I decided to do is I decided to break down this goal ताकि मेरे को exactly पता है to achieve this what would I want to do or what action steps will I have to take. तो अगर मेरा number of clients goal है 1,000, right?
and अगर revenue goal है 3 crores, if you divide that, it becomes 25.2 lakhs a month, right? So total number of calls required to achieve this goal would be, let's suppose, 420 to 560. इसका मतलब हो गया 16 से 22 calls दिन की, right? Total number of applications मेरे को कितनी चाहिए होंगी? 1680 to 200 2000, those are approximately, which is 56 to 75 a day. टोटल लीड्स कितनी चाहिए, टोटल एड स्पेंड कितना करना पड़ेगा, पर डे कितना होगा, टोटल प्रॉफिट कितना होगा आफ्टर एड स्पेंड, राइट? टोटल प्रॉफिट कितना होगा आफ्टर ईयरली एड स्पेंड, एटसेट्रा. एम्प्लॉयज मेरे को कितने चाहिए होंगे टू एक्चुअली अचीव दिस गोल, कितनी कमीशन देनी पड़ेगी, कितना सैलरी कॉस्ट होगा, एंड अगर मैं एक और प्रोडक्ट डालता हूँ तो कितना होगा, राइट? एंड मैंने क्या किया था, मैंने अपने रेजर पे डैशबोर्ड को, बहुत आसान होता है एडिट करना द इनपुट फील्ड, और मैंने ही ऐसे एक फिक्टिशियस फिगर बनाया था कि एक महीने में अगर मेरे पास इतने अमाउंट की वॉल्यूम आ जाए 71 lakhs या whatever, तो मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी. वाओ, राइट? सो दिस इज व्हाट आई रोट डाउन क्लियरली कि मेरे को उस पर्टिकुलर ईयर क्या अचीव करना है, राइट? एंड गेस व्हाट, वी ओवर अचीव दैट टारगेट. बट देन द पॉइंट इज कि अगर मैं ये राइट डाउन नहीं करता तो ये सपना कभी भी पूरा नहीं होता, राइट? एंड देन कम्स माय नेक्स्ट 5 year गोल्स, राइट? सो मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि मेरे को 2020 में क्या चाहिए, बट मेरे को ये भी लिखना था कि मैं नेक्स्ट 5 years तक क्या अपने लिए अचीव कर पाऊंगा. सो आज एट द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ये 2024 चल रहा है, एंड होपफुली एटलीस्ट इन 1 year, the best thing is I'm also very close towards achieving this as well, right? So accumulated wealth goals, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत clearly लिखा है, right? That to get to 8 figures in profits and continuously reinvest inside of my company projects, double my investment and my properties, right? Get houses, right? Get my first office with the necessary stuff, right? Be the number one force taking care of your family, right? And these were some goals that I actually wrote down for myself in terms of my accumulated wealth. And similarly, I did that for business. And now I'm not going to bore you with all the details and nitty gritties of the same, but this is what I precisely did. So, my recommendation to you is, first thing that I want you to do right now is pause this video and write down what exactly is your mission. Then, to achieve that mission, which is the grand scheme of thing, which is your ultimate purpose of life, ठीक है, आप अगले साल तक क्या अचीव करोगे और उसके अगले 5 सालों तक क्या अचीव करोगे, आपको वो लिखना बहुत जरूरी है. एंड जब तक आप ये लिखोगे नहीं, तब तक आप उस डायरेक्शन में कभी भी काम नहीं कर पाओगे. सो दैट बीइंग सेड, अगर आपने गोल्स तो लिख लिया, रोहन बड़ा फैंसी हो गया, चलो गोल्स तो हर कोई लिख लेता है, राइट? विच इज फाइन, बट व्हाट अबाउट द आइडेंटिटी रिक्वायर्ड टू अचीव दैट गोल? क्या आप, अगर मैं अपने से 5 साल पहले रोहन से पूछूं, रोहन, वर यू इवन केपेबल ऑफ डूइंग द थिंग्स जो तुम आज करते हो? Absolutely not. The identity that I had back then, it was not equipped to actually achieve the goals that I am achieving right now. And the identity जो मेरे को अपना next target, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे को billionaire बनना है, मेरी current identity मेरे को billionaire बना नहीं सकती है. So I will have to change myself consistently to be able to actually achieve that goal, hopefully one day, right? बट लेट्स टॉक अबाउट 5 साल पहले वाली आइडेंटिटी रोहन की, एंड उसको क्या चेंजेस करने थे इन ऑर्डर टू बिकम हु ही इज टुडे. इन ऑर्डर टू अचीव द गोल दैट आई डिड टुडे, एंड 5 साल पुरानी बात करें, आई वांट टू बी अ विजनरी, humble, customer obsessed, innovator, relentless, passionate, helpful, disciplined, icon, and a philanthropist as well, right? And again, this is not necessarily सिर्फ आज के, but even in the future as well, which is something that I aspire to be like. मुझे कैसा ऑफिस चाहिए, मुझे घर कैसा चाहिए, मुझे कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो इंस्पायर कर रहे हैं, राइट? व्हाट काइंड ऑफ कार डू आई डिजायर, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी दैट आई वुड प्रेफर, right? For example, I want that my organization gets in the top 10 company list in the country, right? In the top 10 startup list one day, hopefully, right? And how exactly my team should be there, right? So these are all the things that I just added like a picture collage, and just by looking at this, it like doing this once in the morning and once at night really pumps me and gets me going towards whatever I want to do. If we were to break down this identity to actually become the version of myself that is capable of achieving these goals, मुझे अपने character traits को define करने पड़ेंगे. इसका ये मतलब है that in order to become this person, I will have to become and act like an apex predator, right? Which basically means कि
if I want to be the best in the industry, right, which honestly 5 years ago अगर आप मेरे को बोलते कि ऐसा होगा, honestly I would have laughed. But this is what I had to do in order to actually win this race in such a competitive industry that I am in today, right? I had to learn how to become this apex predator so that I could dominate my competitors, right? The second attribute, focused, because इस space में and even when you're doing a business, distract होना इतना आसान है, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, यहाँ से पैसे आ जाएंगे, ये कर लो, right? And saying no to majority of the things, that was a habit that I had to develop. Customer oriented, making sure that I'm doing my level best, whatever is possible in my hands, right, to make sure the customer is getting the results that they want. Healthy, right? Sensitive, open and transparent, right? And all these various kind of like attributes that I had to build within myself. Being relentless, right? For example, you go harder when everyone else has had enough. You go into the zone and control the uncontrollable. You know exactly who you are. You have a dark side that refuses to be taught to be good. You're not intimidated by pressure. You thrive on it, right? And when everyone hits the in case of emergency button, they look at you. So I needed to build all these characteristics within myself to achieve the goals that I wanted for myself, right? And similarly, I also wrote down the exact kind of body type and style that I'll have to represent अगर मेरे को ये goal achieve करना है, right? For example, what should be my body type? What should be the exact weight? Should I be groomed? Should I have a clean cut with a stubble or not, right? And what would be some of the achievements that I'll be responsible for? Who are going to be my mentors who will support me throughout this journey? What will my branding look like, right? These are some important things. And then the next thing that I did is I also wrote down the legacy that I had built in 2020 thus far. इसका ये मतलब है कि अगर मैं इतने बड़े बड़े गोल सोच रहा हूँ और रोज मैं बस यही सोचता रहा हूँ कि अरे कितनी अच्छी होगी मेरी जिंदगी अगले 1-5 साल बाद अगर मैं कर लूँ. बहुत लोग क्या करते हैं, इतने ज्यादा गोल ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो अपना करंट और पास्ट भूल जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट उनको कॉन्फिडेंस इश्यूज हो जाते हैं, एंड फिर वो सोचने लगते हैं ओ शिट अभी तो मेरी लाइफ कितनी बेकार है, मैं तो तभी खुश हो पाऊंगा अगर मैं 5 साल में ये सब गोल्स अचीव कर लूँ, विच इज द रॉन्ग मेंटालिटी टू हैड. एंड पर्सनली मैंने भी ये मिस्टेक की थी एंड इट वॉज पेनफुल. ओके, सो व्हाट आई डिसाइड टू डू इज आई रोट डाउन कि यार मैंने एट द एज ऑफ 20 70,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया, राइट, जस्ट फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म. इन अ ईयर मैंने कुछ $36,000 कमा लिए थे. मैं इतना फेमस हो गया था कि लोग मेरा कोर्स टोरेंट कर रहे हैं, राइट. मेरी एप्स पे 80-80 हज़ार डाउनलोड आ रहे हैं, राइट. स्टूडेंट्स को रिजल्ट आ रहे हैं, 1-1 लाख लोग विजिटर्स ज्वाइन कर रहे हैं. उस वक्त मेरे प्रोग्राम में 62 मेंबर्स एनरोल हो गए थे. इतना ट्रैफिक आ गया था कि वेबसाइट ही क्रैश हो गई, राइट. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई रोट डाउन. आई इवन क्रिएटेड लाइक अ मैप. फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल में एवरेज था, ये पिक्चर है जहाँ मेरी टीचर मेरे को लिटरली स्कूल से निकाल रही है. दिस इज वेयर आई ट्राइड वेरियस काइंड ऑफ बिजनेसेस. 18 साल की उम्र में जब मैंने अपना फर्स्ट 8 लाख 9 लाख कमाए, राइट, एक महीने में. व्हेन आई वाज द सीएमओ फॉर अ $multi-million कंपनी, जब मैंने यूएबिलिटी लॉन्च की, जो मेरे यूएबिलिटी के रिजल्ट्स आए, राइट, मेरा जो फर्स्ट प्रोग्राम लॉन्च किया, फर्स्ट 1 CR प्रॉफिट जो मैंने एट द एज ऑफ 22 कमाया, राइट, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ जो हमारे गोल्स थे, राइट. So this is what I did for myself, and then I also wrote down कि मेरी स्टोरी कैसे होएगी, राइट, कि हमारे प्रोग्राम में कितने स्टूडेंट्स होंगे, क्या कैसे हमारा मास्टरमाइंड इवेंट होगा, एक दिन मैं नया प्रोग्राम लॉन्च कर पाऊंगा, ग्रेट प्रोडक्ट होगा, ग्रेट फॉलोअप सिस्टम होगा, ग्रेट ब्रांडिंग होगी, ग्रेट रेफरल सिस्टम होगा, एंड दिस इज व्हाट आई रियली aspired towards, right. And then I even wrote down or basically create a collage of like how exactly I want the business to be like, right, so that the people that I look upon, I can get inspired by. I even wrote down the same for fitness as well, for relationships as well, right. And I had to develop certain convictions ताकि मैं ये goals actually achieve कर पाऊँ. For example, a big question mark is, रोहन आपको और पैसे क्यों चाहिए, आपको और फिटनेस अपना क्यों ठीक करना है, आपको फाइनेंशियली और बेटर क्यों होना है, आपको बेटर रिलेशनशिप्स क्यों चाहिए. बिकॉज फॉर फिटनेस आई डोंट वांट टू डाई एट माय 50 or without having control on my life. That was my why. For business, I wrote down because I have a strong desire to turn all people into individuals with esteemed characters that can be represented globally rather than the image that we currently present. Indians के against बहुत ज़्यादा racism हो रहा था. That is something that I noticed abroad when they are going out and actually pitching their services. This is what I want to change.
right? So rather than Indians being considered as an outsourcing agent, ठीक है, um, and having all that misbeliefs that a lot of people abroad have about us, I decided to launch this company and change that. This is why I do business. The opportunity cost of not doing this business, low paying job, daily commute करना पड़ेगा, strict ground rules होने पड़ेंगे, no sense of freedom होगा, right? So this was the conviction that I had. Then what were the skills that I needed, right? So I needed how to actually run a funnel, right, which is a marketing funnel, and then being able to successfully diagnose, bro, which part of the funnel is actually broken. Then again, system control, which is like the metrics needed to achieve the goal. What was the behavior that I needed, right? This is the time I had to wake up. This is the time I had to work out. This is the time I had to meditate. This is the time I had to do gratitude. And this is the time I had to study this particular document, right, in order to, really visualize and see myself achieving that goal. Okay. एंड देन किस टाइप का इन्वायरमेंट होना पड़ेगा ताकि मैं गोल अचीव कर पाऊँ, राइट? एन ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट. बहुत सारे लोग अपने बड़े बड़े गोल्स करते हैं, उनका ऑफिस देखोगे आप, पूरा गंद वंद आसपास पड़ा होता है. इट्स नॉट क्लीन, इट्स अनक्लटर्ड, राइट? आई लाइक एन एनवायरमेंट विच इज कलरफुल, नेचुरल लाइटिंग है, राइट? देयर इज अदर लाइट्स, द साउंड इज प्लेजेंट, furniture is there and attractive, there are plants around if needed, mementos are present, art if you can, right? And the temperature is exactly suited to my body. So these were all the things that I had to literally do. Like a lot of people, what they do is they have like 3-4 computers, इतना fancy fancy iPad यहाँ पे चल रहा है, इधर उधर expert बन रहे हैं और पैसे कुछ कमा नहीं रहे. Honestly, like I had to like really simplify my life. Like एक computer चाहिए, which is only one laptop, right? Because more computers, more issues, right? It needs to be super fast, one of the highest spec laptops. Just one phone, I don't need 4 or 5. No tablets, just one screen. I will use a mouse. No crap, right? No fancy webcam, none of that crap. Just one Ethernet and just one thing on the desk. Minimum apps, one tab, at reach of everything. Phone always off when I'm doing deep work. No email, clean desktop, binaural beats. Again, you can type binaural beats on YouTube whenever doing focus work. But what I'm trying to say is these were the things needed in order to achieve the goals, right? Certain things that could block me when achieving these goals. For example, I would sometimes start getting in the mindset of blaming the market कि यार इंडिया में लोग इतना पैसा नहीं देते. So I would like always try to like rewire my brain कि नहीं नहीं यार, actually they do pay a lot, right? So these were things that I had to do. I had to also create a list of affirmations that I would read every single day. For example, this is one that I really like: accomplishments and meaningful connections with other purpose of life. Your purpose in life is to give other people their purpose. Just know that the dots will connect somehow. They always have. So these are some wonderful quotes that I've heard some of the big entrepreneurs on earth use, right? And yeah, I just like to store them somewhere. These were things that I did. Now the question is, how can you also do the same for yourself? Well, to help you out with this journey, what I've done is I've created this 11-page document, which is kind of like a replica of what I did for myself in order to achieve this goal. आपको क्या करना है? आपको इस डॉक्यूमेंट पे जाना है, क्लिक करना है फाइल, मेक अ कॉपी, एंड धीरे धीरे करके जिस तरह मैंने आपको वॉक थ्रू दिया ऑफ द अकम्पलिशमेंट्स एंड एवरीथिंग दैट आई रोट डाउन फॉर माई सेल्फ, आपको भी यही एग्जैक्टली टू द टी लिखना है फॉर योर सेल्फ. And the next thing that I want you to start doing is I want you to create a spreadsheet जहाँ पे आप ऐसे ही कॉलम्स बनाओगे using the exact format that I'm showing you. आप डेली, राइट, वैसे तो मैं बता रहा हूँ 99.9% ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी नहीं करेंगे और इसके बाद जाके कोई फनी मीम या कुछ तन में बट की वीडियोस देखने लग जाएंगे, राइट? बट दिस इज फॉर द 0.1% ऑफ द पीपल हु आर सीरियस और आप एक्चुअली अपनी जिंदगी में कुछ चेंज करना चाहते हो. राइट डाउन द डेट, राइट डाउन आप किस टाइम उठ रहे हो, राइट डाउन कि आपने उस दिन एक्सरसाइज किया, एंड सुबह मॉर्निंग माइंडसेट, मतलब क्या आपने ये जो अपना डॉक्यूमेंट बनाया है इसको A to Z एक्चुअली स्टडी किया इन डेप्थ. किस टाइम आपने अपना वर्क स्टार्ट किया, किस टाइम आपने एंड किया, आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, एंड नाइट को डिड यू एक्चुअली कंप्लीट विजुअलाइजिंग दिस डॉक्यूमेंट, राइट? एंड आपने ये ढंग से प्रैक्टिस किया, एंड आप किस टाइम बेड पे गए, राइट? एंड व्हाट टाइम डिड यू स्लीप. ओके, इफ यू डू दिस फॉर द नेक्स्ट 30 to 60 days, आप अपनी जिंदगी का डे एंड नाइट डिफरेंस खुद देख लीजिए, एंड एज अ रिजल्ट यू विल ऑल्सो बी एबल टू अचीव एनी गोल दैट यू वांट. एंड अभी तो मैंने आपको ये 60 days बोला, अगर आप ये 5 साल कर लो, आप पहचान भी नहीं पाओगे आप क्या थे 5 साल पहले. That's what happened with me and that's what worked for myself.
राइट? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन बिलो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जिनको जो कोई भी गोल अचीव करना चाह रहे हैं इन देयर लाइफ। एंड ऑफ कोर्स लेट मी नो इन द कमेंट्स आप क्या नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे, एंड आई सी यू in the next video. Bye bye, Rohan here.